All right. We were talking about types of interrupts in the last lecture. Polled I/O difference between I/O, which is polled, and interrupt-based input-output by the processor. So we talked about that. Then, in what happens? That is the question. What happens if an interrupt occurs during an ISR? During processor is already working on and some other interrupt service routine. It may be very small, few millisecond, but it's very likely that another interrupt occurs during that time. So that can be problematic, but uh, sometimes it is useful also. So basically, ISRs are to take care of this. The ISR, interrupt service routine, या interrupt procedure कह लें, is kept very small. But still an ISR interrupt can occur, and if it is not properly handled, processor state can be corrupt, and processor cannot go back from the interrupt service routine to the main. So it will not be able to go. It will lose the PC value, or some other registers may be destroyed. So, for example, some count value was 10, it may become some other value. So you have to take care of this also. Okay. So usually during interrupt, the interrupts are disabled, and from returning from interrupt service, the last instruction is to enable the interrupt again. That few microsecond, you can assume that it's very unlikely that an other interrupt will occur. So last few instructions, you enable the interrupt again. So that is uh, called uh, the ending of interrupt ब्रैकेट. इंटरप्ट ब्रैकेट इसे समझ लें. क्लोजिंग ब्रैकेट में काफी चीजें होती हैं, इसमें एक ये भी होता है कि आप इनेबल कर देते हैं इंटरप्ट्स को. You cannot also leave interrupt flag disabled for very long time. You cannot disable interrupts for a very long time because you may lose some. So that's why interrupt service routines are kept very small so that you don't lose interrupt. uh, आप इंटरप्ट सर्विस रूटीन में जाते हैं, आप फर्ज करें डिले कॉल कर लेते हैं 200 मिली, इंटरप्ट डिसेबल करके 2 सेकंड की डिले कॉल कर लेते हैं. डिले जो है वो जाहिर है वो तो रजिस्टर बेस्ड होती है, उसमें कोई टाइमर कोई कुछ नहीं यूज होता. डिले इज नॉट डज नॉट नीड एनीथिंग, इज अ सॉफ्टवेयर लूप दैट रन्स व्हेन यू कॉल millisecond delay underscore ms. It runs a software loop. So and during if interrupt occurs that, and you go into that interrupt service routine and you call a 2 second delay to disable further interrupts, so for 2 seconds processor won't be able to do anything else, nothing, because interrupt is there. So for 2 seconds nothing can happen. And if there is another device attached to the processor that is wanting the attention of the processor, that is in need of the processor time, that may actually be denied. So it may not be able to get the time that it needs. Uh, and in some cases, it probably wouldn't even know that I have not been heard by the processor. So
मैनी टाइम्स यू हैव टू सी कि इंटरप्ट अगर आई है तो क्या प्रोसेसर ने उसको एक्नॉलेज भी किया या नहीं। ये तो नहीं है कि मैंने प्रोसेसर को इंटरप्ट डाली, आगे से प्रोसेसर किसी ऐसी जगह डिले लूप में फंसा हुआ था एंड इट डिडंट टेक केयर टू केयर ऑफ माय, it did not take care of my interrupt. So what happened? So if you are, if in olden days people would disable interrupts and that would hang the processor forever. The only way to come out of that was in, to uh, reset the processor. So that's one way to nowadays, you cannot. Interrupts are deep inside the processor software hierarchy. They are on the very low level hardware abstraction layer, and you are not from the when you install any operating system, basically that operating system is taking care of your computer. You cannot do anything. That operating system is the master of your computer. You may be thinking, oh, why this is my computer, I am doing this, I am doing that, ha ha ha. But actually, the OS is he is letting you use this computer. And nowadays, this is the case. So if you happen to olden days, that was not the case. So you could disable timer interrupt, so processor would hang. Like you can write a program, disable interrupts, and then call the same interrupt over and over again in while one. So that would really kill the processor. Similarly, if mouse interrupt flag gets very long, disabled for very long, that means the process is stuck in another ISR. That would mean that process, because mostly mouse interrupt is has a very high chance of being acknowledged. That we talk later. But if this is not being acknowledged by the processor, that is highly likely the processor is has disabled the interrupt, and it is basically in a loop where cannot come out. Uh, so that's where the thing about watchdog timer talked about becomes important. The watchdog timer will then, if that is there, that can help you in that. PCs and personal computers don't have watchdog timer. So if the processor gets stuck uh, in embedded system, it will reset the processor. Uh, the types of interrupt we talked about: internal interrupt and internal interrupt, software interrupt, hardware interrupt. Why I'll not go into what is software interrupt, because that doesn't make sense to me a lot. Basically, what is a software interrupt? You create my interrupt as a interrupt service routine procedure or function. Now there are always few things that you want to do were the very first time that interrupt service routine runs. So the first time that interrupt service routine. So how do you make sure that it is not possible कि आप वेट करें एक्सटर्नल इंटरप्ट का कि वो एक दफा इंटरप्ट आए और पहली दफा के इंटरप्ट वाले हैं जो आपने करना था वो काम करें. So you can just like any function, you can also call your interrupt service routine procedure MySR. Just type MySR semicolon. It will run the interrupt service routine. In there, you may have some flag in software which would know that this is the first time this this is being run. So before you enable all the interrupt flags and you start you arm your interrupts, you go to the main. You can call the interrupt service routine, and that way this will be the first time that ISR will be called, and that way you can set few things in the interrupt service routine. That is called setup call.
So when you interrupt call को पहली दफा call करें through the software, that is called setup call. So that many processors have built-in uh, structure to know that this is the first call to the interrupt service routine. So that is, I would think that is called the software interrupt because you are calling interrupt service routine through the software. Uh, so we talked about polled interrupts and vectored interrupts. Similarly, we talked about maskable and non-maskable maskable interrupts. So that's an interrupt enable flag. Uh, this is a diagram which is basically a typical structure of a polled interrupts. So interrupt occurred, you come into this function where you make global interrupt equal to 0 so that you cannot be interrupted during this interrupt. So GIE is the global interrupt flag, this one over here. When this is delivered set equal to 1, 0, no one can interrupt. When GIE is 1 only, then the processor can be interrupted, and that depends on these whether what every interrupt has an enable with it. Red colors are enabled. So every interrupt has an interrupt. Sorry for the OR symbols. I don't like these symbols, but I could not draw them better in PowerPoint. So please, for once, forgive me for drawing OR gates like that. नाराज तो नहीं हुए ना आप लोग? मैंने इस तरह से OR गेट ड्रा कर दिए। हसन ने भी? नहीं सर। So let's come the process of interrupt priority. In proper real-time system, every task or every person who can interrupt the processor must have a priority, and each interrupting or each task must have a unique priority. It may not be like an desktop processor. In desktop processor, there are priorities, but many devices can be assigned same priority. So hope then you would say how the process if the 5 devices have same priority and they, who will get so I'm not going to go into that discussion because that will be very much going in further detail into the interrupts into the operating system concepts. Uh, Let me just discuss it that in proper real-time systems every time this is a bottom line requirement, hard requirement that every interrupting task should have a priority. Uh, this uh, PIC processor has two interrupts, high priority interrupts and low priority interrupts. I will not go into the low high priority interrupts. There are two high priority interrupts, and of course, we'll not go into that. And the low priority interrupt that we are usually using by using the interrupt keyword, that low priority interrupt is polled interrupt. So in that interrupt, basically you go into the interrupt service routine and you ask who is disturbing you, who has generated an interrupt. The timer interrupt flag is set to run the timer interrupt, and you go to exit. What is there at the exit point? ये देखें मैंने go to exit लिखा हुआ है. So this is a kind of you can say high abstract what to call pseudo code type code. So go to exit comes here, enables and returns from interrupt service routine or a return. This is return from interrupt.
So every code runs and it goes here. So if the interrupt, if some other has interrupted, and during this code running, that interrupting device has stopped interrupting, that will not be acknowledged. क्योंकि इससे आप गो टू एग्जिट कर देते हैं. अगर यू वांट देम टू बी एक्नॉलेज, डोंट गो टू एग्जिट. अगर ये फ्लैग सेट है, ये भी करो उसी बीच में. अगर ये दो फ्लैग सेट हैं, दोनों को हेल्प कर दो, एंड देन यू come to the return service. But this is what you do in pick 18f. This is the structure, that you have a global interrupt enable, a global disabled here, and then global interrupt enabled here. So the priority is not there. I will not talk about priority because that is what operating system is. The study of operating system is a lot about priority, how they are setting, and how what is the priority inversion protocol. Then there are so many things. If you take embedded system course, you will learn all of those priority based systems and how to avoid priority conflicts. Uh, so this is the actual pick code. Basically, what does is that whenever interrupt comes, it increments the count, and it does nothing else. So here in the interrupt, void interrupt, we go there and we check whether the interrupt zero flag bit is 1. If that is 1, that means we count plus plus and we make it 0. If 0, making it 0 means that you can be interrupted again from interrupt 0 flag. So this is right before the main. The interrupt service routine should be before the main. So when we go to main, you are these usual kind of settings, LCD setting and all other things. Then you uh, make the interrupt rising edge. You can make it falling edge interrupted system or rising edge interrupted system. You can clear the interrupt flag so that you can be interrupted. You clear the enable the interrupt flags, and you enable the uh, ग्लोबल इंटरप्ट फ्लैग. इंटरप्ट जीरो का लहदा से आपको इनेबल करना पड़ेगा. ये बाकियों सबका जीरो करना पड़ेगा आपको. इट्स अ गुड आइडिया बिफोर यू गो टू मेन. जिस तरह पिछले सारे कोड आपने जितने भी किए हैं उसमें हमने चूंकि इंटरप्ट यूज नहीं की थी, तो हमें ग्लोबल इंटरप्ट इनेबल बिट को जीरो कर देना चाहिए था, ताकि अगर किसी वजह से भी कोई इंटरप्ट वगैरह स्पूरियस इंटरप्ट जनरेट हो, तो वो इंटरप्ट सर्विस रूटीन में जाके कहीं हैंग ना हो जाए प्रोसेस, क्योंकि वहां तो कोड ही कोई नहीं लिखा हुआ हमने. So usually this should be added. This should have been added in every code that we have written so far, right in the beginning, that global interrupt enable should be equal to 0. लेकिन अगर हम लिख देते तो फिर आपने 10 सवाल पूछने थे कि ये क्यों इस तरह किया हुआ है, ये क्यों नहीं किया हुआ, ये क्या है ग्लोबल इंटरप्ट. तो हमने फिर ये कहा कि अभी इस पे खामोश ही रहते हैं, होपफुली के स्पूरियस इंटरप्ट आपको डिस्टर्ब नहीं करे. So what happens in while one? We are just changing the state of D pins, so that if the LEDs are on, they become off. If they are off, they become on. Inverting every bit of the D port, and we go to delay for 1 second, and then we display count. So there is no delay in while one. There is nothing, not needed anything now. Sorry, there is no delay in interrupt service routine. Sorry, I'm sorry. But you can add a delay, and if you don't want, you can choose not to add a delay. I would like to add some little bit of delay, so that uh, every while loop gets enough time to run. Uh, so ये क्या आ गया यहाँ पे.
इसका टास्क रंग चेंज करना पड़ेगा। Right. So that's the a practical example of the code that you can write on pick, and the count increments in this task is a separate task that increments count. So this is the pick block diagram. We can see, we have seen what are we have talked about. We talked about this oscillator, timers, port design, how they work, interrupt control logic. That is, we have talked about. We'll talk about RAM and ROM, EEPROM, and we'll talk about this. So some of these block diagrams we have covered. So this is the main processor. This is a programming ROM, and this is the main processor. And these are timer ports. They are all slave to this processor. Timers are turned on and off by the processor. Interrupts are handled or acknowledged or not acknowledged by the processor. Ports are under the control of the processor. When it wants to read a port, it can read. Otherwise, it can don't care that port. So everything is under this main mind of the processor, the CPU. So all of this, everything on this is on the single chip. इसमें से कोई चीज बाहर पे नहीं आई हुई, वेरी इंटरेस्टिंग, ऑल ऑफ दिस स्टफ इज ऑन अ सिंगल चिप, CPU, RAM, ROM, interrupt, oscillator, timer, ports, everything is there. So these are some of the register configurations that you can see yourself when you start writing on this. uh, so there are some examples you can will do in the lab tomorrow, how to use interrupts. So any questions so far? Everything we have done. Types of interrupt priority. One thing, if I have a couple of minutes, and that is the difference between a procedure call and an interrupt. आना यार जरा अहमद. So you may have a procedure called sorry, int sum of 5, int a b, सारे int है, मैं बार बार int नहीं लिखना, c d e बार बार नहीं लिखना चाह रहा. तो यहाँ पे you say return A, B, C, D, E. So this is a function. You can in the main somewhere you can say main you can say x is equal to sum of 5 uh, uh, age 0, age 1 एंड सो ऑन. पांच इंटीजर आप यहाँ प्रोवाइड करेंगे, तो x में क्या मिलेगा आपको? व्हाट विल यू गेट इन x? क्या मिलेगा? एनीवन? छोटा सा सवाल है यार, कितना बड़ा नहीं, जल्दी से जवाब दे दें ताकि लेक्चर सम खत्म. मिल जाएगा एजेस का. एजेस का सम मिल जाएगा ना, 5 एजेस का सम आपको मिल जाएगा. तो आपने इधर जो कोड चला है आपका, और ये जो कोड चल रहा है यहाँ पे, इसके बीच में ये कोड आएगा, तो यहाँ पे जो पीसी की वैल्यू है, इसके बाद पीसी, ये वाला पीसी की वैल्यू नहीं चलेगी. हम ज्यादा डिटेल से, बड़ी इंटरेस्टिंग तरीके से इसको बहुत डिटेल से पढ़ेंगे. इसके बाद पीसी ये नहीं होगा, इसके बाद पीसी क्या हो जाएगा? पीसी ये हो जाएगा. वो इसको करेगा. जाहिर है इसको करने के लिए उसको कंपाइलर को, क्योंकि ALU तो 2 नंबर को इकट्ठे ऐड कर सकते हैं, तो कंपाइलर कुछ टेम्परेरी वेरिएबल यूज करके
ये सारी कैलकुलेशन करेगा, ए प्लस बी करेगा उसको टेम्प में डालेगा, फिर प्लस सी करेगा उसको टेम्प में डालेगा, फिर प्लस डी करेगा उसको टेम्प में डालेगा, फिर प्लस सी करेगा उसको टेम्प में डालेगा. सो कंपाइलर हैज इट्स ओन स्पेशल रजिस्टर टू यूज फॉर दिस. They are not usable registers. Every compiler in PIC also there are some registers where compiler can use and to handle situations like this. So they are called user invisible registers. So those are user invisible registers. So that is needed to do all of this. So uh, once this is complete and we have just some value to be returned, PC will be loaded with this value so the code can start from here. What with the interrupt, you you don't call it. It can be that you are executing this interrupt, you can executing this interrupt, you have executing this interrupt. So it can happen. So interrupt needs more kind of responsibility on the part of the processor to save all the important data so that when it comes back, this process that is running should not know uh, the difference before the interrupt and after the interrupt, except maybe some global variable that change. That has to be done. If interrupt or any procedure that does not return anything, the compiler optimizing compiler will simply remove that. एक ऐसा ऑप्टिमाइजिंग कंपाइलर जो कि ऐसे फंक्शन को आप कॉल करते हैं जो कुछ रिटर्न ही नहीं कर रहा, कुछ ग्लोबल कुछ चीज ही नहीं चेंज कर रहा और कुछ रिटर्न भी नहीं कर रहा और कोई ग्लोबल वेरिएबल नहीं चेंज कर रहा. कंपाइलर उसको ऑप्टिमाइजिंग कंपाइलर उसको कोड में इसमें कॉल देता है. आप कोड समझते हैं मैंने ये फंक्शन कॉल किया हुआ है, लेकिन कोड में एक्चुअली ऑप्टिमाइजिंग कंपाइलर उसको कॉल नहीं करता, तो उसका फायदा कोई नहीं. आप कोड में लिख दें ए इज इक्वल टू ए सेमी कॉलन, ऑप्टिमाइजिंग कंपाइलर वो वाली लाइन नहीं चलाएगा. व्हाट इज ओएससी? हाँ भाई, ओएससी क्या है? ऑसिलेटर सर्किट. Oscillator is also a complex circuit because we can have internal oscillator, we can have RC oscillator, we can have a high speed megahertz crystal oscillator. So oscillator is OSC stands for oscillator. So this is a separate circuit inside the processor, which actually determines on what speed the processor is going to run and what will be the source of the clock टू द प्रोसेसर. क्लॉक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. क्लॉक तो एक ड्रम है, उसकी हर बीट के ऊपर प्रोसेसर ने एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करनी है, डांस करना है उसके ऊपर. तो प्रोसेसर इज ऑलवेज डांसिंग ऑन क्लॉक, डांस कर रहा था. सॉरी. तो दैट्स द सीन हियर. तो इधर क्यों रुक गया यार? So thank you very much for today's lecture, and we'll see some examples, more examples in the lab. So interrupts are going to be with you throughout the rest of the course. And I would like to, anything you do, any project you do, try to use interrupts in your code, because that makes a hell of a difference between a regular computer science student and engineering student. Regular computer science students को interrupt का कोई idea नहीं होता, but they are there. So if you go a kernel level programming करें, आपको interrupt का पता होना चाहिए. किसी भी लिनक्स में या किसी भी जगह पे जाके आप कर्नल लेवल कोड करेंगे तो आपको इंटरप्ट्स का पता होना चाहिए. आपने डीएलएल लिखनी है, डायनामिक लिंक लाइब्रेरी लिखनी है, इंटरप्ट्स का पता होना चाहिए. एनीवे, थैंक यू वेरी मच. गुड बाय. अहमद इमरान, क्या हाल है आपके? अच्छे नहीं है. डिड यू अंडरस्टैंड टुडेज लेक्चर? सॉर्ट ऑफ सर, मैं नहीं सुना सर लेक्चर. मैं किसी और चीज पे बोल रही थी.
है? ओहो, okay, we can talk about that later, maybe in some other Zoom call. Hassan Habib, how is life? अल्लाह का शुक्र सर. अच्छा, समझ आ गया आज का लेक्चर? यस सर. गुड गुड गुड. Sir, I have a question. हाँ जी, सर आप दोबारा रिपीट कर देंगे यूजर इनविजिबल रजिस्टर क्या होता है? यूजर इनविजिबल रजिस्टर्स हैं. असेंबली लैंग्वेज में हम देखेंगे कि कुछ रजिस्टर्स हैं R0 R1 से लेकर R, आई डोंट नो हाउ मच. So these are variable names at assembly language level. So these registers are used by the compiler. क्योंकि आपने ये लिखा हुआ है, आपको पता ना ALU तो एक वक्त में 2 इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर सकता है, 2 चीजों को ऐड कर सकता है. आपने कितनी चीजों को ऐड कर दिए? 5 को. तो वो क्या करेगा? टेम्प इज इक्वल टू, इसका जब कोड बनेगा ना इसका, तो ये बनेगा टेम्प इज इक्वल टू A प्लस B. फिर क्या होगा? टेम्प इज इक्वल टू टेम्प प्लस C. फिर होगा टेम्प इज इक्वल टू टेम्प प्लस D एंड सो ऑन. So this temp variable you is not written here. क्या ये यहाँ पे मैंने कहीं temp का नाम लिया हुआ है? तो ये कोड जब ब्रेक डाउन होता है असेंबली में जाके, तो असेंबलर आपको पता ही है ना, ALU 2 चीजों को इकट्ठे ऐड कर सकता है. एक A बस पे जाता है, एक B बस पे जाता है, एंड यू गेट द रिजल्ट ऑन ALU आउट. So you Sir, cannot do this in one clock cycle. You go through this. So these variables are internal compiler variables. And they are user invisible. You cannot say कि मैं temp को कुछ कर देता हूं, जाके temp को एक्सेस नहीं करने देगा वो. और सर एक और क्वेश्चन, सर ऑप्टिमाइजिंग कंपाइलर क्या होते हैं? All right, good question. ऑप्टिमाइजिंग कंपाइलर वो होते हैं बहुत ही लेवल 3, अगर -O3 से आप किसी को कोड को C में कंपाइल करें ना, तो वो फॉर वेरी हाई स्पीड कंपाइल होता है. उसमें ये है कि अगर आपने ऑप्टिमाइजेशन की का फ्लैग ऑन किया हुआ है कि ऑप्टिमाइज करो कोड फॉर मिनिमम टाइम सो दैट इट रन इन द फास्टेस्ट पॉसिबल वे, तो उसमें आप फिर ये कह देते हैं, कंपाइल कर लेते हैं -O3 से, ऑप्टिमाइज लेवल 3. तो आप अगर कमांड लाइन में आपने कोई कोड लिखा हुआ है, सी पे जाके आपने कोई कोड लिखा हुआ है, कभी कमांड लाइन में लिनक्स में या कहीं आपने काम किया हो, तो आपको पता होगा कि ये कमांड लाइन पे आप ये कर सकते हैं. अदरवाइज आप आईडी के अंदर जाके आप उसकी ऑप्टिमाइजेशन लेवल सेट कर सकते हैं कि कंपाइलिंग के कंपाइलर का डाउन एक होता है ड्रॉप डाउन बॉक्स, उसमें ऑप्टिमाइजेशन का लेवल लिखा होता है कि आपने किस लेवल की ऑप्टिमाइजेशन करनी है. जब ये ऑप्टिमाइजेशन आप करते हैं ना, तो फिर आपका कोड कुछ और बन जाता है. फिर आप उसको जाके सिमुलेट करेंगे ना, या उसको लाइन बाय लाइन रन करने की कोशिश करेंगे, तो आपको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि वो समझ नहीं आएगा आपको क्या हो रहा है. उसकी वजह क्या है कि आपने कोड में लिखा हुआ है A इज इक्वल टू A, ये कुछ कर रहा है. वो सर बस एक को ए में दोबारा स्टोर कर रहे हैं. हाँ, तो कुछ नहीं हो रहा है इसमें. नॉर्मल नॉन ऑप्टिमाइजिंग कंपाइलर ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करेगा. सोर्स रजिस्टर भी ए होगी, ये पूरे प्रोसेसर में से ALU में से गुजरेगा, और आउटपुट भी ए बस पे ए ही आ जाएगा, और डेस्टिनेशन क्या होगी, वो ये वाला रजिस्टर जो भी ए को साइन हुआ है उसी में डाटा स्टोर हो जाएगा. लेकिन ऑप्टिमाइजिंग कंपाइलर समझेगा कि ये तो किसी ने बाउंड्री मारी है, जी सर. तो वो ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी. आप इसको जब कंपाइल करके लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करके इस लाइन पे जाने की कोशिश करेंगे, ये लाइन तो वहां पे होगी नहीं. So किसे that is समझ what, आ that is an optimizing compiler. तो ये भी हो सकता है कि ऑप्टिमाइजिंग कंपाइलर पहले A प्लस B करे,
फिर C प्लस डी करे, तो फिर E करे, तो ये टोटल एडिशन कम हो जाए। काइंड ऑफ बाइनरी एडिशन टाइप की चीज करेगा। तो बजाय इसके कि इसके अंदर ही सारे ऐड करें, वो पहले A प्लस बी कर लेगा टेम्प 0 में, फिर C प्लस डी करेगा टेम्प 1 में, तो उन दोनों को ऐड करेगा तो वो सम आ जाएगा इन चारों का, और उसमें E ऐड करेगा तो 5 का सम हो जाएगा। समझ रहे हैं ना ये बात? जी सर। So that's the job of optimizing compiler. When it's not optimizing compiler, every compiler has, modern compiler has this optimizing level O3. आप नेट पे सर्च करें व्हाट इज ऑप्टिमाइजेशन ऑप्शन डैश O3, वो आपको देखें फिर क्या होता है। फिर वो कोड जो बनता है ना, ये कंप्यूटर आर्किटेक्चर का कोर्स पढ़े, आपको तो पता लगेगा कि कोड जो बनता है वो अजीब सा कोड होता है। वो कोड इतने जबरदस्त तरीके से ऑप्टिमाइज होता है। जाहिर है कंपाइलर प्रोग्राम को आउटकम का फर्क नहीं आना चाहिए। जो प्रोग्राम क्या है, सर्टेन इनपुट्स हों, उसके सर्टेन आउटपुट्स जो एक्सपेक्टेड हैं वही हमेशा आनी चाहिए। वो कैसे होती हैं तो ये आपका मसला नहीं है। तो ऑप्टिमाइजिंग कंपाइलर गलत आंसर नहीं देता, आंसर तो वो सही देता है, लेकिन वो ये मेक श्योर कर देता है कि जो आपने इनपुट दिए आउटपुट दिए वही आए, लेकिन जो बीच में रिडंडेंट कोड है ना, ऐसा कोड जो कुछ भी नहीं करा, किसी वेरिएबल को ग्लोबल या वो सारा निकाल देता। कोई ऐसी लूप लिख दें, फॉर आई इज इक्वल टू 1 to 0 मिलियन टाइम, फॉर आई इज इक्वल टू 1, जे इज इक्वल टू 1 to मिलियन, एंड ए अंदर लिख दें ए इज इक्वल टू ए, और मिलियन मिलियन टाइम्स आपने किया है तो मिलियन टाइम मिलियन बिलियन टाइम का कोड लाइन का कोड लूप चलेगी, लेकिन ऑप्टिमाइजिंग कंपाइलर वो सारा खत्म कर देगा, सारी लूप ही उड़ा देगा। So that's optimizing compiler. Okay, thank you very much. अल्लाह हाफिज़ सर। Allah Hafiz. Thank you.